खबर में पेशेंस बड़ी कम है। जी सर, बिल्कुल। वो ये हम उसका एक्सपोजर बड़ा है फील्ड। जी ये जो है मैंने कर ली। तो उधर चला जाऊंगा अगर मुझे कहा कि आपने को 2 लफ्ज कहने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बाकायदा अपने वेबिनार का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगर इसकी विजन और मिशन की बात करें तो पाकिस्तान में जो कहते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके जो पैदावार है उसको बढ़ाना है और उसकी पैदावारी सलाहियत को हमने आगे बढ़ाना है ताकि ज़रूरी आमदन में इजाफा हो और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसको कम करें और अपने वैल्यू एडिशन जो फ्रेश है उसको वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स में चेंज करें ताकि हमें एक हाई वैल्यू जो है वो मिले। नेक्स्ट स्लाइड पे करें। और अगर इसकी मैंडेट की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसको कम करना है और जो मयारी पैकेज हैं जो इंटरनेशनल जो मार्केट्स की जो डिमांड है उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है और वैल्यू एडिशन करके ताकि हम ज़्यादा मुनाफा ले सकें। बाकी आज का हमारा वेबिनार जो है वो डेट्स के हवाले से है, डेट्स की एनहांसमेंट, इसकी वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बलूचिस्तान और सिंध से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो सिंध और बलूचिस्तान से है। अभी मैं डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वेबिनार की जो डॉक्टर अजीम साहब। जी जी गाजियान, तो आप मेरी आवाज़ जी आ रही जी है? जी जी सर, ओपनिंग रिमार्क्स दे दें सर। जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट शोबा है अ, जो वैल्यू एडेड डेट का है। और थैंक यू वेरी मच, आपने रिसोर्स पर्सन को भी एंगेज किया। और टॉपिक भी आप बड़ा कम्प्रिहेंसिव है आज का जो डिस्कशन होगी। और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हैं और पंजगुर से बिलोंग करते हैं, जो कि एक अनदर एडवांटेज है क्योंकि पंजगुर से जो डेट इस वक्त जो वैल्यूएशन हो रही है वो नेशनल मार्केट में भी जा रही है डेट्स और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ से डेट जो गई है हाई प्रोस्पेक्ट है। तो हमारा जो है इसमें जो डेट जो है इसमें अगर देखा जाए तो हम कोई चौथे पांचवें हमारा लेवल है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में तो हम बहुत एक तरह से वर्ल्ड रैंकिंग में हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इस प्रोडक्शन की जो जो वैल्यू है या इसकी जो क्वालिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल लाइकिंग है, उसमें हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। और उसी की वजह से तकरीबन कोई 60,000 टन जो है क्वालिटी डेट पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और बलोचिस्तान तो पर्टिकुलरली उनकी एनवायरनमेंट ऐसी है, वहाँ तो कोई एक्सक्यूज नहीं। हम बाकी जो रीजन्स हैं जिसमें डियर खां है या शक्कर है, खैरपुर है, उस रीजन में तो हम कह सकते हैं जी अमल दखल है मानसून का, और मानसून की वजह से डेट को जो है क्वालिटी डेट में कन्वर्ट करना, उस लेवल की प्रोसेसिंग करना शायद ज़रा डिफिकल्ट होगा। बड़ी हाई टेक सोल्यूशन जो है वो चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के लिए रिलेटिवली आसान। मुश्किल तो है क्योंकि टेक्नोलॉजीज हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फिर ये है कि फिर मार्केट रिस्पांस है कि जो डेट बलूचिस्तान से प्रोसेस होगी टेबल डेट, तो उसको नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे लेके जाएंगे, वो चैलेंजेस तो हैं। तो एनीवे जो इस वक्त ब्रांड
हमारा जो पीजीडीसी है उसके तहत और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो कोलेबोरेशन है उसमें, उसके जरिए से जो प्रोडक्ट बने हैं वो एक अच्छी बात है कि वो इस वक्त नेशनल मार्केट में एज ए ब्रांड जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और वो उनकी जो है हमारे जितने भी इस वक्त बड़े सप्लाई चेन है उनके ऊपर वो इस वक्त अवेलेबल भी होती हैं ड्यूरिंग जो है सीजन। तो हम सुनना चाहेंगे आज हमारे जो हबीबुल्ला बलोच साहब हैं जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि जो उन्होंने इसमें कमिट किया। हम सुनना चाहेंगे कि जो वो इस सेक्टर के बारे में वो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो क्या रिकमेंड करते हैं हमारे जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, और उसके बाद अगर वो एज ए फॉलो अप एक्शन वो क्या तजवीज़ करते हैं जिसको पीएचडी टेकअप करेगा। और भी वहाँ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्रेस प्रोजेक्ट के हवाले से उसको भी हम काउंट फॉर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा विजनरी होगा, और हमें एक बड़ा क्लियर कट वे फॉरवर्ड मिलेगा कि हम इस सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाएं। तो गाजियन मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़ें। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अभी आगे बढ़ते हैं स्पीकर्स। हबीबुल्ला साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रेजेंटेशन सर। हबीबुल्ला हबीबुल्ला साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जियान, आई थिंक हबीबुल्ला साहब वेबिनार में नहीं है। वो मेरा ख्याल है उनका शायद भी नेट का इशू है। आप उसे चेक कर लें एक दफा। मैं एक मिनट, अभी सर थे, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता सर। हबीबुल्ला साहब का नेट का इशू है, बस वो कनेक्ट कर रहे हैं सर। ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन मैंने शेयर करनी है जियान। सर आप उनको अलाउ करें, वो खुद भी शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है, उनको मैंने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, वो भी को होस्ट है। जी ठीक। आवाज आ रही सर? जी सर, आप स्टार्ट करें हबीबुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी तो अबीबुल्ला साहब आपको जी जी करें शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस वेबिनार में आज की कि आप लोग आए और उसको पॉइंट किया था। डॉक्टर अजीम सर, थैंक यू सर। सर आज का जो टाइटल है हमारी सर, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान डेयरी फार्म इंडस्ट्री, क्वालिटी एनहांसमेंट, रेगुलेशन, एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन सिंध एंड बलूचिस्तान। आवाज आ रही सर? जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे करें सर। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, ये आउटलाइन है मेरी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, इंट्रोडक्शन टू पोस्ट लॉसेस है, उसके बाद डेट फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डेट्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर है, उसके बाद मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन स्ट्रक्चर, उसके बाद डेट वैल्यू एडिशन है, import and export of dates and references। जैसे कि हम सबको पता है, डेट जो है ना एक स्वीट एडिबल फ्रूट है, और ये और ड्राई रीजन में जो है उगता है, और इसकी वर्ल्ड वाइड 5000 वराइटीज हैं। और एक एक जो खजूर का डेट फार्म है, वो तकरीबन 40 to 80 किलोग्राम अप टू 60 years फूड यील्ड है उसकी। उसके बाद ग्लोबल जो प्रोडक्शन है 9.51 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर है। पाकिस्तान में 400 डेट वैरायटी ग्रो करते हैं। पाकिस्तान जो है वो आपका 560 हजार टन पर ईयर वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दुनिया की सिर्फ 6% है। और पाकिस्तान जो है वो आपका दुनिया का छठा डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। बलूचिस्तान एनुअली एनुअली 321.07 टन ग्रो करता है, और जो कि पाकिस्तान की 57% डेट प्रोडक्शन। सिंध जो है ना वो 42.3% उसकी जो है ना कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की प्रोडक्शन में। फाइनली जो डेट है, डेट फ्रूट है, वो मकुरान की जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो कि 70% बलूचिस्तान की जो डेट प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ मकुरान में होती है, जिसमें अंजूर और तुर्बत जो केच एरिया है वो है उसी में है पूरे। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोमोटिंग डेट्स इन रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट्स। नंबर 2 है रिड्यूसिंग डेट वेस्ट लॉसेस फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नंबर 3 जो है उसकी है introducing new technique in agro-industry production line for date valuation। Number 4 है introducing export potential and opportunities of date production in the world। सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। जो डेट डेट क्वालिटी असेसमेंट है उसकी जो सबसे पहले डेट क्वालिटी असेसमेंट जो है वो विजुअली किया जाता है। जो फार्मर्स हैं उसको विजुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी वैरायटी है। इसमें जो है नेशनल वैल्यूज भी उसके और इंटरनेशनल वैल्यूज भी है। जैसे कि हमें पता है रिच है ये इन फूड न्यूट्रिएंट्स और डायबिटिक एंड थेरापेटिक बेनिफिट्स इसके हैं, और दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
नेशनल वैल्यूज़ की तरफ हम जब आते हैं तो सबसे पहले हमें जो ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपने एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइन। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइन को हम इंक्रीज करें, उसको ट्रांसफ़र करें, उसको जो ना इसका अच्छी टेक्नोलॉजी उसको लाएं। इसके बाद जो है ये हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है ना फ्रूट है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा सा पोटेंशियल है कुरान में, खासकर पंजूर और केच में। इसके अलावा जो ना जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं अगर इस पे हम काम करें सही तरीके से। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपे की जानब से जो है ना इस पे काम हुआ है, जिसपे एक डेट प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको तमर पंजगूर के नाम से जाना जाता है। जो यूएई और पाकिस्तान की एक शराकतदारी ने जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज के अलावा जो है ना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं अगर हम इसकी जो चैलेंजेस हैं उसको उसको कंट्रोल करें और इस पे काम करें और इसकी जो है ना इसकी प्रॉपर जो प्रोसेसिंग है उस पे काम करें और ये इंक्रीज करेगा हमारे एग्रीकल्चर जीडीपी शेयर को। रिसेंटली जो सिचुएशन है डेट फ्रूट की, यहाँ पंजगुर में खासकर मकरान में और बलूचिस्तान में डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स काम किए गए हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी है। पीजीडीसी भी उन्होंने भी फंक्शनल बनाया है, लेकिन अब फिलहाल फंक्शनल नहीं है, उस पर काम हो रहा है। जो सब बड़ा जो फैक्टर है जो खजूर जो डेट के ऊपर जो डेट फ्रूट के ऊपर मसला कर रहे हैं वो है डेट फूड और लॉसेस। जब इसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग होगी तो ये फ्रूट लॉस होगी। जो सबसे पहला जो फैक्टर है जो फ्रूट के ऊपर असर अंदाज हो रहा है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें आपका रेनफॉल है। मानसून के दौरान जब रेन होता है रेन जब बारिश होती है तो उस टाइम ये जो है ना फ्रूट फ्रूट जो है ना इफेक्टिव होता है इस पे। आई विंड एंड डस्ट, इसके इस पे एक बीमारी लगता है जिसको बोक बोलते हैं। और आई ह्यूमिडिटी जो है ना डेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। और लॉन्ग लॉन्ग ड्राउट सीजन्स, ये भी एक फैक्टर है जो खजूर के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। इस इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर की जरूरत होती है। प्रोटेक्टिव मेजर में हम डिफरेंट प्रोटेक्टिव मटेरियल यूज करते हैं ताकि हम उसको रेंट से बचाएं, उनको जो है ना बर्ड्स से बचाएं, विंड और डस्ट से बचाएं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें उसकी। और जो अदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो वुमेन फैक्टर है जो हमने खुद क्रिएट किया है, लेक ऑफ प्रॉपर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेट्स। सबसे पहले जब हार्वेस्टिंग इसकी होती है तो लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ टूल्स, मैन्युअली इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अराउंड 25 to 40% ऑफ जो डेट्स होती हैं वो तुरंत लॉस्ट होती है। उसके बाद डिलीवरी है, देयर इज नो प्रॉपर डिलीवरी मैनेजमेंट। आफ्टर दैट दैट्स स्टोरेज, स्टोरेज भी प्रॉपर नहीं है, गुड स्टोरेज हमारे पास नहीं है। अभी जो सी पे आपकी यूएई और पाकिस्तान की शराकत से एक बनी है डेट प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें स्टोरेज की जो है ना अच्छी कैपेसिटी है, तकरीबन 1500 टन जो है वो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और उसकी वजह से जो है ना ये हमारी डेट है उसकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बढ़ गई है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, वी हैव नो एनी कंटेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
जिसकी वजह से जो ना एक साइजेबल जो आपकी प्रोडक्शन है वो वेस्ट होती है। काजेज ऑफ कोस्टल लॉसेस, सबसे पहले जो फिजिकल काजेज है, फिजिकल डिटोरेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है। parasitic disease की वजह से, और absence of weak cooling and lack of infrastructure, or poor containers transportation facilities. Natural cost losses, loss in weight, loss, change in color, change in texture, change in taste, bruising in cuts, rooting. These are the nature of possible losses. It cause dates useless. Fruit maturity stages. The dates take 200 to 210 days for pollination to full fruit maturation. Fruit maturity goes through 4 major stages. The first stage, that is called kimmery stage. At this stage, the fruit is small, green, odd texture, unedible, with eye moisture approximately has 80% of moisture in it. The second stage is Doka stage, which is called color. Physiologically mature, odd, and test moisture contents. It has moisture contents about 50 to 85%. It is red in color. The third stage, which is called Dang stage, which is also called Rotao, partially browned, softening from tips to full fruit, reducing moisture contents 30 to 35%. And softened. The fourth stage, end stage, Kamar stage, color from red brown to dark brown, moisture contents reduced 25% to 10%. Actually, these two stages, they are very sensitive of environmental factors. The factors such as rainfall and humidity. Because at this stage, the fruit is somehow ripen. The third is in the third stage. Then stage is the ripening stage. When in fact fall on the fruit gets destroyed, and somehow the fungus cannot be attached with that form. They just drop, and mostly this is one of the serious issues in Balochistan or date fruits that rainfall causes around 50% of this date losses. These are international standard quality criteria for dates. The dates must play the following characteristics. Intact dates have no meshing, tearing, breaking of the skin. No sound by rooting or deterioration such as to make it unfit for human consumption. Clean, practically free of any visible foreign matter. Free from pest, living pests, whatever wastage of development is. Pest damage, free from pest damage visible to the naked eyes, including the presence of dead insects and or mites, the debris etc. Mold elements visible to अम्मी the वो naked eyes. उधर मैं समुद्री जैसे गया समुद्री एक्सपीरियंस ही Unripe fruit, उसे fruit और light जगह पे in भी नहीं weight, गया अब distinctly आवाज अगर वो आता rubbery in बनाया दे structure, free, free of pollinated fruit, not
coordinated as indicated by distant growth. Next slide. Also, post-harvest management procedure. Actually, the post-harvest management procedure start from harvesting. When the fruit is ready to harvest, first step we harvest, then it has to be pre-cooled, which is called pre-cooling. Then it's goes for sorting and grading. After that, goes under packaging. Packing is the fourth, and the storage. Then marketing. Harvesting manually. There are two types of harvesting. The first one is manual harvesting, which is done in Balochistan. Harvesting season starts from August and continues up to 30th of September. Using special climber tools made up of some special plants leaves. Harvesting from far height cause dead process. Actually, in Balochistan, there is no technical or machinery to harvest the fruit, dead fruit. Therefore, the dead farm are very far. The dead farm are very high in height. From far height, harvesting dates is one of the factors that most of the post-harvest losses. The second one is the modern harvesting technique, which is not available in Pakistan. Actually, it's done by different in Arab countries. Mechanical harvesting field started began in 1962. The system reduced labor cost from 50 to 80% as compared to conventional hand picking method. Pre-cooling and storage. The pre-cooling, storage is done because of removing the field heat. First of all, we have to remove the field heat of dead fruits, then maintain the cool chain. Preservation. Dates require temperature. Date required temperature is 18 degrees Celsius. It can be kept for 2 years at 15 degrees Celsius. After storage, sorting and grading. Artificial-based intelligence machine determines simple operations that sort objects according to the given purpose. Separate dates in different shape, size, and moisture content categories. In minimum size for quality acceptance is the size between 3.02 to 5.08 centimeter. Packaging. Modified atmospheric packaging, which is called MAP type, is common in dead fruit packaging before being placed in boxes. Retail packages can be divided into two categories, as it is shown here in the slide. As you can see from here, the fishbone packaging according to some arrangement, usually fishbone the traditional way. There are usually 7 to 30 dates in this box, placed in 2 layers separated by cellophane, weighing 220 gram to 250 gram. Next. The second one is the window type packaging. As we can see, the fruit is displayed in packaging.
A telephone window showing the fruit is part of the package design, which is usually made of cardboard. These types of packing are of varying size according to the client demands. Next is transportation. Date fruit is soft, fresh, and edible. Need more care. No advanced container transportation is available for delivery in Pakistan. Packing management of dates carrying boxes reduce more vibration damages. Marketing and supply chain structure. Date farm supply chain structure. Actually, the growers, the farmers, the farmers were growing on dates. They are not benefited as they have to be because of the commission agents. First of all, the dates the commission agents, they find the farmers and they collect their dates and they sell these dates to small wholesalers, then occur and the consumers as well. Wholesaler sells these dates to the retailers, and wholesaler also sells these to the companies, supermarket, and companies then process and sell them in supermarket and exporters. There is a huge demand of dates in national and international market. As we can see from these date varieties, Mozati is one of the commercial date variety. Mozati, Rabai, and Begum Zangi. These are the three main export quality of dates. In this table, you can see the local rate per kilogram in Pakistan rupees. The agents, they buy from farmers from 250 rupees per kilogram of Mozati date, and they sell it to 600 rupees in the market per kilogram. As it is Sabzo, Sharifa, Chansor, Rabai, Lini, Karuba, Roach, and Begum Zingi. They buy the dates and very cheap, and they sell it to the market in supermarkets not in supermarket, but in the local market. They sell in high prices. Therefore, the growers cannot be benefited well. This graph shows that profit of grower in Panjgur. As we can see from this graph, around 50% of the growers, they only earn 25,000 to 35,000 rupees annually. And 26.7% of farmers, they earn around 35 to 45,000 only. Whereas 23.3% of the farmers, they earn more than 45,000 rupees. Dates value addition. And the date contain highest fructose as a sugar component, which is completely permeable sugar, easily be converted to ethyl alcohol by fermentation. Medicinal alcohol can be made
from date fruits. These are the byproducts of dates. If we process the dates which are not recommended for export, we can process and make different products such as syrup, juice, honey, jams, beverages, pickles, bakery items, liquid, powder, sugar. The most important, because of the world demand of dates, most of the world, the globe is the world recommend powder sugar of dates, and replacing the sugar we had in tea. Import and export of dates. Total production we export is 0.81 million tons. Balochistan production share is 0.56 million tons, whereas Sindh production share is 0.23 million tons. The top importing countries, which are UAE. UAE is the main importer of date fruit. Then Germany, Australia, USA, Turkey, Japan. Major exporters, these are the exporters who exports the goods to different countries. Higher enterprises, Shameen Foods, traders, and new Dal, Shavas, and Subitators. Import and export updates. As you can see from this graph, UAE models of the dates fruit. And these are the references. And thank you for watching. थैंक यू सर अबीबुल्ला साहब, आपने बड़ी कंप्रेहेंसिवली चीज़ों को प्रेजेंट किया डेट्स के हवाले से, इसकी क्वालिटी एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिशन, जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी जनरली सर आप ओवरऑल जो है एक परसेप्शन दे दें कि बलूचिस्तान में अभी जो करंट सिचुएशन है डेट्स का, सर उसको ज़रा थोड़ी हमें एक्सप्लेन बताएं जनरली कि वहाँ पे अभी करंट क्या सिचुएशंस हैं और कब से हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली मैं अभी ऑन ग्राउंड हूँ, जहाँ पे डेट प्रोडक्शन जो अभी आने वाली है तकरीबन mid of August. So this time the environmental conditions are very affecting the dates, and the production can be reduced because of some phenological shifts. We can see that most of the date farm, they are on secondary flowering stage. Until they have flower, until they have dates which are not mature yet. Dates on farm are mature, but not in colored. They are in maturity stages. In the first stage, which is called Kimmery stage now. So this in this year, the posters losses of dates can be minimized because of different private
data processing units been established in Panjgur district. थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बड़े कंप्रेहेंसिवली चीज़ को एक्सप्लेन किया। अभी मैं ऑडियंस की तरफ जाऊंगा, जो पार्टिसिपेंट हैं, किसी का अगर क्वेश्चन है तो काइंडली एज रेड करें और अपनी क्वेश्चन पूछें। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाजन भाई, आई थिंक क्वेश्चन किसी का नहीं है, आप कंक्लूड कर लें। अवैस साहब से कहें इसको कंक्लूड, वेबिनार को कंक्लूड कर लें। जी जी सर, मैं वैसे आपसे रिक्वेस्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हबीबुल्ला साहब का, जो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कंप्रिहेंसिवली डेट्स पाम के जो सेक्टर है उसको हाईलाइट किया बलूचिस्तान में और सिंध में, जो इसके एस्पेक्ट्स हैं और जो इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। और इसमें बड़ा कंप्रिहेंसिवली जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई और क्वालिटी के हवाले से, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो मेन हमारा कंसर्न था, क्योंकि हमारा जो है ये डेट्स का भी सीज़न अप्रोचिंग है। तो इसमें हमारा मेन कंसर्न था, ये था कि हमारे जितने भी हैं डेट्स फार्म के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको हम ये चीज़ें उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर दें कि हम नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी मेजर्स ले सकते हैं, ताकि हम अपनी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, जो हमारे लॉसेस हैं उनको कम से कम कर सकें। तो उस हवाले से हबीबुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक बड़ा कंप्रिहेंसिव डिस्क्राइब किया था। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये कि इसमें मज़ीद जो है हमारा जो वे फॉरवर्ड हम बना सकते हैं पीएचडी की तरफ से, उसकी तरफ से भी हम अपन जो इंटरप्रेशन कर रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स को हम, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो ग्रोवर्स हैं, हम उनको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं चीज़ पे। तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपना टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए, और बड़ा मतवज्जा हो गया आपने सुना। तो मैं हबीबुल्ला साहब से भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि सर आपने भी अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला। थोड़ा सा नेट का Thank you, इशू sir. ज़रूर था आपकी तरफ से, लेकिन है कि आपने बड़ी स्ट्रगल की, एफर्ट की आपने इसके ऊपर, और आपने एक बड़ी कंप्रिहेंसिव आपने प्रेजेंटेशन भी तैयार की, और हमारी ऑडियंस के लिए आपने टाइम निकाला। तो आपका मैं बहुत शुक्रिया करूँगा। तो आज के इस वेबिनार को हम इस तरह पे आज कंक्लूड करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।